नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अभिनेता और निर्माता कमाल आर खान को 25,000 रुपए की निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। उन्हें मुंबई के ओशिवारा इलाके में हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील सना रईस खान का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी मनमानी ढंग से की गई। उनके संवैधानिक अधिकारों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है, जो निश्चित रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ये मामला तो बनता ही नहीं, ये कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है। उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के गिरफ्तार किया। यह अजीब आरोप भी लगाया कि कुछ कारतूस जैसे 6 गोलियां गायब है। इसलिए मैंने कहा कि ये ज्यादा से ज्यादा प्रशासनिक उल्लंघन हो सकता है, जिसके लिए उन्हें लाइसेंसिंग प्राधिकरण के द्वारा दंडित किया जा सकता है, जिसके लिए उन पर आपराधिक अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। So invocation of incorrect section like 110 of BNS and his arrest carried out in an arbitrary manner, completely disregarding his constitutional safeguards, definitely amount to abuse of process of law. So this is a classic example of abuse of process of law. And even, while I was arguing before the court, the biggest challenge that arose was that while I was arguing before the magistrate court, the question was that section 110 is sessions tribal. So I was asked, of course, while arguing. So I mentioned during my argument that, even magistrate court has immense power and is empowered to deal with cases where prima facie, section that is invoked is not made out. And in a case like this, where intention and knowledge is not even attributed to him, this is not the allegation that he aimed at the building or aimed at the person and fired from his arms. वो जो उनके arms है, that anyway he's a licensed owner. And allegation तो इतना perverse है और इतना bogus है that suddenly after a period of 6 days, suddenly some person whose name bears no mention in the remand report, he says after 6 days that he heard कि हाँ firing उनकी building से हुई है. Suddenly after 6 days he says so. अब उस basis पे, but if you see the range of the pistol cannot be more than 20 to 30 meters, and the distance between his bungalow, my client's bungalow, and that building where जहाँ पे firing हुई है, उसमें ही technically more than 1500 meters. So, even hypothetically, even practically, it is impossible for this act to happen. So absolutely, ये जो case है वो बनता ही नहीं है. Absolutely बेबुनियाद case है. Just abuse of process of law, ऐसे ही बस case को, misuse of provisions of law, ऐसा ही हुआ है. Because अगर आप देखो तो इसमें section 35(3) of BNSS, which is mandatory, to serve notice to any person where offence is punishable up to 7 years or below 7 years, उन्हें notice भी नहीं दी गई, उन्हें बिना notice के arrest कर लिया गया. So अगर आप देखो तो उसके अलावा जो grounds of arrest होते हैं, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि grounds of arrest must be communicated to the accused in writing, उन्हें writing में उन्हें grounds भी नहीं समझाए गए, not even in fact to him in his own language of understanding also, which is again in violation of Article 22(1) of the Constitution and Section 47 of the BNS. तो अगर आप देखो तो इतने सारे वायलेशन के बाद उनका अरेस्ट एब्सोल्युटली आर्बिट्ररी ही है, और वही मैंने कोर्ट के सामने रखा. ये भी एक अजीब सा एलिगेशन आया कि certain cartridges are missing, like 6 bullets are missing. So I said that at the most could be an administrative breach, for which could be punishable by licensing authority, for which he cannot be tried before a criminal court. Come on, like Section 30 of the Arms Act also says that at the most that would be punishable with a fine or 6 months imprisonment. वो मतलब bailable है, उसके लिए क्या आप उनकी कस्टडी थोड़ी मांग सकते हो. तो वो भी एक एलिगेशन था और उसके लिए भी उनकी प्रोलॉन्ग कस्टडी मांगी जा रही थी. और so he always makes controversial statement. So is he misleading the court again? No, how is this misleading? In fact, I mean, if you see law and evidence, what I'm talking about, law and evidence here. In fact, if you see, the prosecution case could be misleading at the most. But here, when I speak on law, facts and evidence, then there's no question for, for misguiding or misleading. Here, whatever, see, controversy and all is absolutely irrelevant here. For a man, once a man is detained, his constitutional liberty is curtailed, liberty of movement, free movement. Now that has nothing to do with what statements he makes in his personal life as a critique, या वो क्या review देते हैं. That is absolutely inconsequential. उसके लिए आप ये सब चीजें बहुत ही अलग हैं, और यहाँ पे अचानक से आर्बिट्री अरेस्ट करके इस तरह से किसको जेल में डालना, that also is travesty of justice.